I think Sarkar is no more a film. I feel a Sarkar more like an experience because जब Sarkar 1 आई थी, I remember I was in college and it's very rare I used to overhear my parents discussing a movie, and Sarkar was one of them that you have to watch it. It's something very different, and Mr. Bachchan is just remind you totally of a different cinematic experience. I was just learning, just growing up. But years later, I think when you get to be a part of a film, it no more remains a film. It becomes, it has a little nostalgia to it. And Sarkar, Subhash Nagre, I think it will always be the most iconic characters. And if I'm a part of something like that, I think it was a huge opportunity for me. Unfortunately, I didn't get the privilege of sharing any scene with Sir, but the way it's been woven in the film, it's the association, the connection it's all out there. But I think with Mr. Bachchan, whether you have worked with him, you've not worked with him, you've met him or you've not met him, it's so surreal and magical that he's connected with all of us. I remember the first time I seen Mr. Bachchan, it was for an ad commercial, and it may sound very silly, I was so excited to see him. I just saw him entering the set. I saw maybe just his back, and that just made my days, and I was so excited that yeah, I've got to be a part of a commercial which is Mr. Bachchan. I was not even remotely around him. And then you end up being a part of something like this, and the way... Do you know how embarrassing you're making it? Sit here. No sir, I don't... ये मुझे रोज मौका नहीं मिलेगा सर ये बोलने का, तो मौका आप हमको दीजिए ना, अपनी फिल्मों में काम दिलवाइए, काम करेंगे आपके साथ, ऐसी भी क्या बात है? I think, and we often wonder, I mean all of us, that what is it about Mr. Bachchan that he is the most loved legend amongst all the generations, and I think it's his... सर मैं घर जाना चाहता हूँ, देखिए ये मुझे बर्दाश्त नहीं, I think sir, आप I can't tell you that how... अच्छा हो गया, अगला प्रश्न पूछिए। ये इन लोगों की कृपा है कि इस तरह हमारे बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन हम सब कलाकार हैं और जितनी ही प्रशंसा हमारी और लोगों की होती है उतनी ही प्रशंसा इनकी भी होती है। इनके साथ भी वही होता है जो हम सब के साथ होता है। कलाकार जब फिल्मों में काम करता है तो उसकी एक अलग छवि बन जाती है, एक अलग ध्वनि होती है, उसका ध्वनि होती है उसकी, और समाज में या पब्लिक में जब जाते हैं तो इसी तरह एक इम्प्रेशन बनता है लोगों का, और वो हम सब के साथ होता है। जब तक हम फिल्मों में हैं तब तक रहता है, जब फिल्मों में नहीं रहेंगे, सीधी सी बात। पहली बात यह है कि बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि वही किरदार है वो 3 सीक्वल्स में आ रहा है, और समय के साथ आ रहा है। यानी कि अगर आज सरकार 3 रिलीज़ होने वाली है 12 मई को, वो आप देख रहे हैं 8 वर्षों के बाद, तो जिस कलाकार ने उसे 8 वर्ष पहले किया था वही कलाकार अब 8 वर्षों के बाद कर रहा है। तो जो भी एक शारीरिक परिवर्तन हुआ होगा मुझ में, वो आपको फिल्म में दिखाई देगा। रही बात सरकार के स्वभाव की, वो उसी तरह है जिस तरह सरकार 1 में था, या उसी तरह है जिस तरह सरकार 2 में था। कुछ चीज़ें जो है वो सुभाष नागरे के साथ नहीं बदलेंगी, लेकिन हाँ उसका काम करने का नज़रिया या काम करने का तरीका हो सकता है कुछ वर्षों, इतने 8 वर्षों के बाद, और बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो बदल गई हैं, उनको देखने के बाद हो सकता है कि वो बदले। ये अब आप जनता बताइए कि क्या उनको अलग लगा। Anu Karkare, she's someone who wants to avenge her father's death from Sarkar. So she feels that her father was killed by Sarkar, so she wants to avenge his death. So in an outline, in a nutshell, that's what her motive is. That's the motive with which she takes a new journey on. But there's much more to it. I think I won't call it a negative character. There's nothing negative. I think it's a shade of grey. I think something which all of us in somewhere have in us. But for me, the most exciting part was that I got to play something like this for the first time. And I'm glad that it's Ramu sir. I think he offered me something like this with a
intention of not having me do something which I've done before, or which something which resonates with my personality or the kind of roles I've done before. So that's why all the more it was really very challenging. राम गोपाल वर्मा के साथ हम इतने सालों के बाद नहीं मिले। हम कई बार मिले और कई फिल्में भी की हमने इस दौरान। बट you don't judge your decision just because there's been a gap of so many years. I think what really matters is whether the director and the maker wants to make something, has a vision, has an idea, and wants to translate it into film, and wants to express that vision through you as an artist. So to say that there was a long gap about अंतराल था दोनों के बीच में, ये ठीक नहीं है। कई फिल्में हमने की उसके बाद, सरकार 2 के बाद भी, और हमारा संपर्क जो है वो बना रहता है। रामू और मैं अक्सर ऐसे ही मिल जाते हैं, कभी कभी बैठते हैं, बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं, दुनियादारी के बारे में बात करते हैं। और कहीं ना कहीं बीच में कभी भी एक ऐसा ख्याल निकल आया कि चलो भाई एक सरकार क्यों ना बनाए। दरअसल सरकार 3 का जो आइडिया है वो अभिषेक ने दिया, और उसने जो आइडिया दिया रामू को, फिर उसके बाद जा कर के हम लोग सब बैठे एक साथ और हमने सोचा कि हाँ ये तो अच्छी बात हो सकती है, और इस तरह करके ये बात। तो राम गोपाल वर्मा और मैं जो है 8 साल का इंटरवल एक रहा हो बीच में, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग मिलते जुलते हैं। अमित को मैंने एक फिल्म पहले में देखा था, और फिर यदा कदा छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह देखता रहता हूँ मैं, कभी इंटरनेट पे या ट्रेलर के रूप में आती रहती है। और फिर मैं शुजीत सरकार के साथ काफ़ी काम कर चुका हूँ, तो शुजीत ने मुझसे कहा कि अमित के साथ आपको काम करना चाहिए, कभी भी अवसर मिले, और बहुत अच्छा कलाकार है। तो जब ये अवसर आया सरकार में काम करने का, तो मैंने रामू से कहा कि अमित साहब को भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो उसको आप कास्ट करिएगा। इस तरह से उन्होंने अमित साहब को कास्ट किया। Very good, yeah. I think that's something which all of us, all of us, despite not being so rehearsed or mechanical and all, yet we come with. He's also one of them who comes with a certain mindset, with certain a kind of a discipline. That discipline could be in any way, and for him, what I realized, what I felt working with Amit was he really gets into the character. He really gets extremely engrossed, absolutely inside out about the character. If Shivaji is about this really restless guy who can just, with just a mind of his own, I think he kind of plays it inside out. So which is, I think, very interesting. Something very interesting for me to be working with someone. And again, very easy to work with, very good. So it was amazing. It's difficult to pick one scene, because the moment you do that, then you degrade the other scenes that you're going to be seeing in the film. It's very difficult. It's very difficult to choose one actor that you may like in the world, or one actress that you may like, because in a sense it conveys that you don't like the others, and that's not true. They're all competent, they're all very good. To say that there is one particular scene in Sarkar which I like is again falling into the same category. कोई एक दृश्य जो है वो चुनना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो किरदार है और जो कहानी है, जो उसकी रूपरेखा है, वो एक बंधी हुई कहानी है। उसके दरमियान हमको काम करने का अवसर मिला है, और जब हमें पूरी कहानी मालूम है तो प्रत्येक दृश्य जो होता है उसको करने में हमको एक अच्छा लगता है, और एक तरह से हमको लगता है कि हाँ ये दृश्य ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी कहानी के अंदर बैठ जाता है सही तरीके से। तो अब कहना कि नहीं ये वाला दृश्य जो है ज़्यादा अच्छा है, ये अजीब सा लगेगा। I would definitely second what Sir just said, but there is one particular scene, for some weird reason I'll always remember it. There's a scene where I have to shoot a gun.
have to fire this shot, and I'm petrified at personally of sound. I have this phobia. So till date, to have even a balloon around me somewhere far distantly in my vision, it'll just disturb me. It's just very juvenile. It's funny, but it's, I don't know. I have this since as a child. So I was one of those kids who used to hide in a quilt on Diwali. Till date, I have not gone beyond a full chudi. So, and for some reason, I presumed that I will not have to fire anything. I'll just have to put a gun because it's Sarkar. It's symbolic that I may or may have not taken a shot. They said, no, you have to. You have to you have to use it. I said, okay, so will that sound come? He said, what do you think? We just handed over a Diwali pataka gun to you or what? Obviously it will. For me, it may sound something really small for someone, but everybody has their own fears, everybody has their own phobias. For me, that was something, a really big deal. I remember I rehearsed 1 or 2 times and that was all right with them. But I went back to my vanity and I was shaking because to me that sound it's just something else. And but I don't want to share this with anybody. So I just came back for my shot again, and I just kept telling myself, if I really get scared in the shot, that means I'm not in the character. So sometimes I think your work, they do maybe I think influence or maybe help you really at a personal level to overcome or to test your will. So I think that's something I'll always remember. I don't think just the way Sarkar is a man of few words, but more of the actions. That's what makes him than just mere words. I think that's what Sarkar is in itself all about. I don't think I need to say more. I don't think I need to say much. Sarkar already has a very niche place for itself in its audience. So I don't think I need to say much. You guys have made it something beyond just an experience, and we can't wait to share it with you on 12th of May. सरकार अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कहानी रही है और कई बार इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पेरिस पॉलिटिक्स जिस तरह से चलती है, किसी भी बड़े इंसान के घर में, वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, सेलिब्रिटी हो, उस दायरे में जब सरकार बनती है तो उसका एक अलग वातावरण होता है। एंड आई जस्ट फील दैट इन सरकार 3 वी हैव कंटिन्यूड with the same sentiment and the same emotion, but there is now a lot more intrigue because 2 of the main characters that were associated with 1 and 2 are no longer there. In 1, Vishnu dies. In 2, Shankar dies. And so one would wonder, what is going to happen now in this household or in this home, and what kind of emotions exist after having seen 2 deaths. What is the condition of the mother going to be? What is the condition of the father going to be? Who are the people now that are close to him? Because some of the people that were very close to him were also eliminated in Sarkar 2. Who are these new people that have come into his life? What is their power? How important are they? And is there going to be some kind of a new entry into Sarkar's life? कौन है कोई ऐसा शख्स जो अब उसके पारिवारिक तौर पे नज़दीक आने वाला है? क्या वो नज़दीक है या दूर है या बदला लेने आया है या सहायक बन के आया है? क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार 3 में आपको देखने को मिलेंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत ही अद्भुत विषय है जो कि हर कहानी के साथ, हर सीक्वल के साथ वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जिस ढंग से कहानी को बनाया गया है उसकी सीमा नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ एक नया होता रहता है और यही सबसे आकर्षक चीज़ होती है सरकार, एक जिसे कि हम एक ब्रांड कहना चाहें या फ्रेंचाइज कहना चाहें। तो एक नई कहानी आपको मिलेगी, नई किरदार उसमें मिलेंगे, नई परिस्थितियाँ दिखाई देंगी। आमतौर पर होता है कि हाँ भाई ठीक है, वो परिस्थिति हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 2 बहुत ही अहम किरदार और परिवार के सदस्य, उसके दोनों बेटे जो हैं वो उसने खो दिए।
परिवार के अंदर क्या स्थिति है। जो उसके नज़दीकी लोग थे वो अब नहीं है उसके साथ। कौन है उसके साथ अब? क्या परिस्थितियां हैं और कौन है जो एक परिवार का सदस्य बन के आया है और क्या वो नज़दीक रहेगा या विरोध करेगा। ये सारी चीज़ें आपको सरकार से